Great. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Jahanzaib Kamal, and I am medical director of the Getz Pharmaceuticals, and I'm also involved in pharmacovigilance and clinical research. Today, indeed, it's a great opportunity to talk to a lot of participants for PISM. And first, I congratulate all the management committee of this conference on anchoring something very, very important meeting of today. My role today is pretty simple. We have a very interesting topic that we would be discussing, that is the access to quality healthcare in low, middle, and income countries like Pakistan. My role today is very, very simple. I'm just going to moderate the entire session, and we'll make sure that we have very healthy and engaging dialogue in the rest of the around 45 minutes or so that we have for this. So we have a little bit of technical issue here. Yep, didn't work. Next slide, it will be a little easier. If you can fix this, please. Yeah, can you put the next slide, Dr. Oman? Right, so that's the agenda. What we're going to do is that we're going to invite, thank you very much, we're going to invite the panelists. We have constructed a very meaningful panelist today for this important dialogue. And then we will interact with the audience. So you will have a live poll. There will be few questions that we would like to collect your input and your say into the poll. Once you have say your opinions, then the panelists will going to have some conversation dialogue happening. And at the end, if time permits, we'll keep around 10 minutes for the questions. If you have some burning question, you can ask directly from the esteemed panelists that we have. And that's the mode of today's discussion. Around 40-45 minutes we're going to conclude. So let me introduce the panelists. First, I will request Professor Dr. Masood Hamid. Sir, please join us. Dr. Masood Hamid is a very well-known academician. Sitara Imtiaz, Tamga Imtiaz. अगर आप लोगों ने ओझा या डॉ यूनिवर्सिटी को देखा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, he is the man behind that entire transformation. Very humble personality. Thank you very much, sir, for joining us today. Next is a public health expert, Dr. Farhana Shahid. She's a PhD, and she has spent many years in public health area. Currently, she is also consultant for Bill Melinda Gates Foundation. Now it's only Melinda. No, it's not only Bill. It's only Gates now. So she left. So it's Gates now. Please, Farhana, please join us. Next on the panelist is Shamim Raza. Many of you must be knowing Shamim Raza. He has a very vast experience in hospital pharmacy area, and he has been championing medication safety, access, and sustainability across his large number of years that he have worked in this organization. I'll request Shamim Raza to please join us. Thank you, sir. Last but not the least, we have Zishan Ahmed. Zishan Ahmed is Chief Operating Officer for Research, Innovation, Business Development at Getz Pharma. He has a very vast experience in this area, and he has accomplished WHO qualifications and other important accreditation for Getz Pharma over his long tenure. Zishan, please join us.
Um, so just check the mics are working or not, Dr. Numan, right? So now you can see that we have very diversified panel of experts that we have. We have a physician and administrator. We have a representation of quality from a pharmaceutical company, or a public health expert, and we have a hospital pharmacy expert as well. So you see the difference of opinion or the dialogue that's going to happen, which is going to touch base upon many important issues. A lot of different opinions would be definitely generated during this conversation. So just to bring everyone on a same platform, on the same stage, my role is only to highlight few important slides that we have. We all work in Pakistan healthcare system. These slides are already known to us. There's nothing very important. We all know that many of our patients do not have access to healthcare. We know that the standards for healthcare access is within 30 minutes. Patient has to reach to see a physician. And the global standard for healthcare access is around 80% of the population would be able to reach. But we have lots of challenges in our healthcare. That includes, technology, large number of patients that we have, the primary healthcare systems not working effectively, the secondary healthcare systems are not governed rightly. And the tertiary care hospitals are actually overburdened by many patients that walk in for very small ailments as well. And that increases the overall burden to these many different consultants, including the pharmacists and the public health experts as well. Now this slide is very nicely constructed by my colleague Dr. Numan, and it only highlights that what are the positives that we have in a public health sectors. That includes this low cost, medical expertise is there, we have specialized care, we have a big, large infrastructure also there, but we also have these demerits associated to the public health. There are a lot of corruption. We do not have weak implementation and poor maintenance of these things. So at one side, we have a lot of positives of the public health sector, but we also have the con side or the demerit sides of the public health sector. Most of us are working in the public health sector. I don't want to reiterate anything further than these simple slides. So in private health, yes, private health system is flourishing. There are a lot of patients that we see in private here. So it provides high quality of care. It does provide, it has a lot of modern equipment. The treatment is fast, the patients have less waiting times, and then there is a lot of competition happening within these private hospitals. This is where they escalate and change their methods of working and improve the outcomes of these patients. But we have the demerits of such a private healthcare system. It actually pulls down the engagement of the doctors. Those who are working in both public hospitals and those private, they focus more on the private practices. And then it somehow also evolves the idea of generating more profits from these patients. And we see a lot of practices which are not right that happens in these different hospitals. So this closes the stage that I just wanted to set up for today's dialogue. Now it's time for the opinion poll. Dr. Noman is with me. He's a medical manager for Gets Pharma. He's helping us to run these polls. So if you can go to this website, www.crowd.live/gets1. That's the code. So go to crowd.live and enter the poll code GETZ1, GETZ1. I know it's a bit technical thing, but we have time. We will wait for all the people to log in and then we will start with the poll. So we have our colleagues present among you as well, who can provide you the QR code on their mobile screen as well.
So take your time because it's very, very important to have your input into the all. I see my panelists also involving and wanted to say their opinion there as well, right? The Shanian brother seems to be very keen. Right. So it's pretty simple. www.crowd.live and the polling code is get1. Dr. Oman, can we see how many people have logged in? Yeah? If you can change the slides. I just hold a bit because I see many people are also scanning the QR code. So we'll wait another 30 seconds so everybody can join the poll. Sorry? No. Ab baith jaएं. Sir, please have a seat. All done? Done? You're done. Great. People, colleagues at the backside, you're done, guys? Done? Okay. Can we see, can we move to the poll questions? Dr. Mann? Yeah, Yes, please. Just 1 minute, guys. Yes. I think you all are familiar with the internet challenge that we face in our country, so. Yeah. Can we see the poll? Just a minute, I'm not able to connect with internet. You are in? Great. We're just going to start off with the first question. Wait, yeah, so he's going to start off. यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है Okay. Okay, how many of you can see the countdown on the screen now? That's great. Great. Okay. Right. So, can we have the first question? Numan? All right. First, it's just a practice question. First one. So it's a trick question. So the question is that if you are giving a drug to a patient whose dosing frequency is 30 minutes, by what time the patient will consume 3 doses? It's a little tricky question, but it's simple mathematics. Please answer. The overall time would be around a minute to answer this. So if you have, if you are giving a drug to a patient which requires 30 minutes frequency, then at what time they would be over? That's fine, sir, but you have these 4 options. 1 hour, 1 hour, 30 minutes, 3 hours. We have more than Basic 50 time. Can we see the results? They're visible. Huh? They're visible on this. यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है हाँ दिखाओ लगाओ लाइव लगाओ लाइव So let's see the results. Okay. So we are there are people who are still writing. So 1 hour 30 minutes. So 1 hour 30 minutes. About what? 34 votes. 50% of the population saying 1 hour 30 minutes. So it's 1 hour. About 25%. So what's the right answer? 1 hour. Here you go. So एक अभी लेगा 9 बजे फिर 9:30 बजे और एक 10 बजे लेगा 1 घंटा खत्म हो गया.
So that's why I said that it's kind of a little tricky question. Okay, so let's roll it down to more serious questions that we have. So question number 1. Question number 2. So what do you believe is the most critical challenge in delivering quality health care resource setting like Pakistan? Inadequate delayed funds, increasing number of patient workload, shortage of trained staffs and absenteeism, aging and lack of infrastructure, weak governance. There are no right or wrong answer. Just have your say on one. There is no right or wrong answer. पोल दिखा दो, ऊपर कर दो. The most critical challenge in delivering quality healthcare in Pakistan. Adequate delayed funds, increasing patient overload comes out to be the biggest one. Shortage of trained staff and absenteeism. We have weak governance, aging and lacking in infrastructure. Right. So we need to see the results only, right? Can you just blow? Right. I'll start with Dr. Farhana. The audience have put their say here. So they're saying mainly that the inadequate and delay funds. Do we have inadequate funds with us, or there are some other issues? You can use your mic. Thank you so much. Hello. Yes, I can. I am audible now. Right. So that's very interesting that people feels that a lack of funds is a main issue in providing the quality care to the patient. But in fact, जब आप data उठा के देखते हैं, मैं अभी एक conference से होकर आ रही हूँ, वहाँ पे पता ये चला कि 40%, एक तो ये कि हमारे पास पैसे कम हैं, being a developing country, low resource country है, हमारी allocation of funds जो हैं health care के लिए वो बहुत कम किए जाते हैं. लेकिन उसके साथ साथ 40% ऑफ द फंड्स आर बीइंग अनयूटिलाइज्ड. ठीक है, तो जो फंड्स मिले हैं, जो पैसे मिले भी हैं, हमारे कहते हैं लीडरशिप में, मैनेजमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है पब्लिक सेक्टर के अंदर कि उन फंड्स को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली इसको यूटिलाइज कर सकें. तो फंड्स ना होना एक इशू है, बट उस फंड्स को एफिशिएंटली यूज़ करना जो है वो एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज है. Right, thank you very much. Dr. Masood, सर आपने इतना बड़ा काम किया है, Daw University, so do you think that funds कम होते हैं हमारे पास? बहुत शुक्रिया आपका. देखिए, फंड्स की तो कोई कमी नहीं है. आप हेल्थ का बजट उठा के देखें, वो हम कहते हैं 3% है, 2% दे रहे हैं, ये कर रहे हैं. लेकिन अगर आप इंडिविजुअल देखें, सिविल हॉस्पिटल का बजट देखें, मैं कराची की बात करता हूँ, या गवर्नमेंट इंडस को कितनी ग्रांट दे रही है, 10 अरब रुपए की. SIUT को 18 अरब रुपए गवर्नमेंट देती है, उनकी अपनी जनरेशन अलग है. लेकिन सिविल हॉस्पिटल का पर बेड जो रेशो बजट है वो आगा खान के बराबर है. मैं अपनी मिसाल देता हूँ डाव की. जब मैं वाइस चांसलर बना 2004 में, तो टोटल फंडिंग जो थी हायर एजुकेशन कमीशन की 2004 से लेके और 8 तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था. ये जो सब बातें डेवलपमेंट की, और 5.5 अरब रुपए की फंडिंग हुई उसके अंदर. गवर्नमेंट सेक्टर में ताकत बहुत है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये फंड्स अगर सही तरह इस्तेमाल हो जाएं गवर्नेंस के साथ, तो हम अचीव कर सकते हैं कुछ लेवल ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर. All right, sir. Thank you very much. Let's move to question number 2, which is question number 3. Sorry, वो मैं पहला वाला क्वेश्चन काउंट नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों. Right. Okay. What type of support would help to deliver better care in low resource environment? More medical supplies, equipments? Could be C, could be B. Yeah, I'm sorry. Okay. Here you go. Better training of doctors, paramedics, and non-paramedics. Support policies, strong leadership, implementation policy, prioritization of financial budgets,
in the area of greatest need. There is no right or wrong answer. Just give your opinion, and we'll have the experts' input into it. We have a split here, almost a split of priorities, and शमीम साहब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जब एक ऐसी सिचुएशन हो जिसमें तीन चीज़ें सेम इम्पोर्टेंस दे रही हों, करेंगे क्या? मतलब आपके लिए हाउ यू विल tell the people that what are your top thing, you know, almost a split in three, and one is almost not meaningful. Please. Yes. Can we have somebody from Gets Pharma to help here and just be there for a while? Yeah, just be there. Sana, Dr. Sana, can we just be there and you can sit at the corner? देखिए इतना ये स्प्लिट हो गया कि मुझे जवाब ढूंढने के लिए मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी. मुश्किल जवाब सवाल आपके पास आया है सर. मैं जो ना मैं फैंस के इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं मुझे पता नहीं चल रहा. बट आई थिंक पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसके भी मैं समझता हूँ ये सारे के सारे जो ऑप्शंस थे, ऑल 4 ऑप्शंस आर एक्चुअली द मेन डिलीवरी के लिए जो है मेन चैलेंज बनते हैं. लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है वो सर लैक ऑफ ट्रेनिंग है. ट्रेनिंग इन एवरी एस्पेक्ट. मैं भी अभी डॉक्टर साहबा की तरह जो है वो एक कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ निकल के, और वो पेशेंट सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है. अब सब AI ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखूं तो प्रिस्क्रिप्शन भी सही से अगर नहीं लिख रहे हैं, और अगर उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग है इन एवरी एस्पेक्ट. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे फिजिशियन बैठे हैं, वो मेरे कुलीग हैं, काबिल एहतराम है, दे आर द ड्राइवर्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम्स. बट माई पॉइंट इज़ दैट देर आर सर्टन थिंग्स जहाँ पर आप उनसे बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू टॉकिंग टू देम you find a difficulty to convince them that if they think that they know most of the things about drugs, but being a pharmacist, I can say, you know, as a drug expert and as a drug custodian, I would say that there is a interaction, this dose is not correct, things like that. Your first question is actually reflecting 1 hour 30 minutes, 90 minutes में 3 गोली. Right. So I think all 4 components to me are equivalent as far as the better delivery is concerned, because her process एक दूसरे के साथ interwoven है. I mean, linked with each other. All right. So if one is loose होगा तो you maybe, you know, you cannot provide that service. That's my opinion. All right. So thank you very much. Let's move to question number 4. Which area? We have closed? No, people were still putting in, right. So, which area should pharmaceutical companies prioritize in order to improve the access to healthcare, medicine, underserved markets like rural Pakistan? Overwhelmingly, it's lower drug prices. That's the response actually coming from all of you. Not really keen on expanding or reaching out, giving to access की पे नहीं है, and then education of HCPs in rural areas पे भी the crowd is saying that it's not really very important. So we have Zishan. Zishan, this question goes to you now. Do you think that lowering the price of the drug to almost 1 rupee would serve this purpose? I think... I'm sorry, it's a difficult one. Yeah, I know that. Price is an important contributor for the access of medicine. There is no doubt about that. But again, हमारे यहाँ ये एक misconception रहा है कि lower price is equal to health care, of quality health care provision, which is an
जो एक होलिस्टिक जवाब नहीं है इसका, अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करूंगा इस डिस्कशन को। यहाँ पे थोड़ी सी ना अवेयरनेस की भी हमारी सोसाइटी के अंदर, और ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये एक चैलेंज है। जैसे मैं आपको एक मेटाफोर क्रिएट करता हूँ, हमारे पास रोज़ रोड एक्सीडेंट्स की जो सूरत हाल है, द वे वी फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं या उनकी इन्फोर्समेंट अच्छी नहीं है, एंड वो डिटरमिन करता है कि आपके पास रोड सेफ्टी इश्यूज़ क्या हैं। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री। तो व्हेन इट्स अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, इट मीन्स इट हैज़ सर्टन रेगुलेशंस which is being imposed on the healthcare system, on pharmaceutical industry as well. Pharmaceutical industry, lower middle income countries के अंदर जो challenge है वो है regulatory infrastructure, regulatory enforcement. For example, if I एक 1 to 10 के scale पे अगर मैं highest regulation को rate करूँ, US FDA may be 10, Europe may be 8 or 9, और WHO picks maybe 7 or 8. पाकिस्तान और other similar countries कि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो प्रॉब्ली एट 1 और 2 के लेवल पे है। WHO के पास एक बेंच मार्किंग टूल है जिससे वो रेगुलेटरी सिस्टम को असेस करते हैं। पाकिस्तान, और उसमें जो मिनिमम एक क्वालिफाइड क्राइटेरिया है फॉर एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी टू ऑपरेट ऑप्टिममली, इट्स 3, वहाँ 3 से स्टार्ट होता है। पाकिस्तान और सिमिलर कंट्रीज़ वो उस लेवल पे भी नहीं पहुँचते हैं। WHO की एक रिपोर्ट है विच वॉज इशूड मैनी ईयर्स बैक, that because of substandard and counterfeit drugs, annually around 200,000 deaths hoti hai, which is a staggering number. So now correlate this with the price of medicine. बहुत सारी इस तरह की lower middle income countries है जहाँ पे you can get cheapest price drug. पाकिस्तान के अंदर जो pricing है वो बहुत low है if you compare to better economically developed countries. तो प्राइस इस फैक्टर, बस अगेन अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल के रोल का, तो यहाँ पे अगर वो इन्फोर्समेंट नहीं है जो यूएस में है या यूरोप में है, तो इसका मतलब क्या है कि जिम्मेदारी बन जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कि वो किस लेवल पे ऑपरेट करना चाहती हैं। डू दे वांट टू ऑपरेट एट द लोएस्ट लेवल एंड प्रोड्यूस द चीपेस्ट क्वालिटी एंड लोएस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग, और दे वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी स्टैंडर्ड, एंड अगेन दिस कैन बी डिपिक्टेड इन अवर ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो हम सेक्टर में कर रहे हैं, विच इज़ लिटरली निग्लिजिबल। और उसकी वजह क्या है? यहाँ पे रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट नहीं है, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑप्ट करती हैं अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए, व्हेन दे इन्वेस्ट इन द क्वालिटी, दे इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स, दे इन्वेस्ट इन देयर सिस्टम, दे गो टू अ लेवल जहाँ वो WHO पिक्स या यूरोप पे पहुँचती, तो इट्स बेसिकली देयर ओन इनिशिएटिव। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक रोल ये है कि दे शुड इन्वेस्ट इन क्वालिटी, they should target exports. So similarly healthcare system के अंदर जो important role है quality of medicine का वो पड़ेगा। Similarly there is very very important role with the regulatory जो enforcement है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी जो अपने फ्रेमवर्क्स हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट टाइम इस तरह का पैनल हो, एक रेगुलेटर को भी बिठाएं इस तरह के, राइट? यस प्लीज, आई वाज सेइंग दैट यू रियली वांटेड टू कमेंट ऑन समथिंग, प्लीज फील फ्री, गो अहेड। इसको अगर सिंपल टर्म्स में कहना चाहूँ, हम अब यहाँ सवाल था एक्सेस के ऊपर कि एक्सेस टू केयर के अंदर इन एलिमेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं एक्सेस को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी कि फिजिकल एक्सेस भी इसके अंदर शामिल है, सोशल कल्चरल एक्सेस भी शामिल है, और फिर ये थर्ड था कि अफोर्डेबिलिटी या फाइनेंशियल एक्सेस, क्या लो प्राइस करने से ड्रग को क्वालिटी केयर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या एक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। सो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 2 था जिसमें आप यू वांटेड टू इम्प्रूव या इन्हांस दी डिलीवरी चैनल्स को या डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करें, तो हमारा जो डिस्पैरिटी है रूरल एरियाज़ के अंदर, आई वुड आल्सो गिव दैम सम वेटेज कि आप अपने जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को और अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है उसको भी एक्सपैंड करें, उससे भी एक्सेस इंप्रूव होगा, ना सिर्फ ओनली प्राइस को लो करने से। दैट इज माय 2 सेंस। खाली एक चीज़ डॉक्टर अतम इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखें दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट वो डॉक्टर साहब जस्ट मैंशन कि एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन we are talking about access of quality healthcare, not only access, and we should take these words simultaneously. And understanding of quality here in the lower middle countries, जहाँ पे as I've said कि regulatory standards are very low, तो वहाँ access के साथ we need to work on quality as well, and quality comes either through enforcement or through personal initiatives. So I think it goes hand by hand.
Right. So just an example, we have a lot of funds for polio, but it's free drugs. Malaria, we have free drugs. Hepatitis C, we have free drugs, a lot of infrastructure. We have maternal health and other areas with free. So giving everything for free will not going to solve the problem. And lowering the price of drugs, I think, will not going to solve the problem. Sir. डॉक्टर जांजेब मैं भी अपना हिस्सा थोड़ा सा इसमें प्ले कर लेता हूँ. जी, आई थिंक करें, पाकिस्तान जो है वो 80% या 85% हमारे जो हैं आउट ऑफ पॉकेट पेयर्स हैं. 90% सर. 90%. सो अगर जहाँ पे 90% लोग हैं एंड देर इज़ अ रिसर्च हैपेंड, आई मीन के पाकिस्तान के जो हम लोगों का जो मेडिकल का बिल है अगर आप देखें उसमें उसका 70% जो है ना वो फार्मास्यूटिकल्स हैं. वाई आई एम सेइंग इज दैट अस्पताल तक एक्सेस नहीं पहुँच रहा, वो जा नहीं रहा, वो घर के पास किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके कहते हैं गोली मुझे दे दो. पोली फार्मेसी, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ नाउ. जिन लोगों को पता चलता है वो अपनी स्पेंडिंग जो है हॉस्पिटल में जाके क्लिनिक्स में जाके, क्योंकि उनकी फ़ीस उनको जेब से पैसे देना, सस्ती क्वालिटी है कि नहीं है वो दवाई उनको मिल जाती है. तो आई थिंक ये आउट ऑफ पॉकेट के जो इश्यूज़ हैं ये इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग दिस इशू, अ बिग इशू. Right. Thank you very much. Let's move to question number 6. Most of us are actually working with various hospitals, both public and private. So the question is related to what is the most significant barrier to hospitals in Pakistan in achieving and maintaining accreditations, the global accreditation, the standards of care that most of the hospitals do. So what do you think that is the biggest factor in this area, accreditations? So these accreditations provide the standard of care for all. So most of the thing is people, the participants rather, they think corruption, mismanagement of hospital administration is one. Lack of financial support and resistance to change. Shortage of qualified healthcare professionals is also turning out to be around 20% of what people say. So, डॉक्टर मसूद के पास मैं आऊँगा सर इस सवाल का जवाब लेने के लिए, बिकॉज आपके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. सो सर पाकिस्तान में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स एग्रीडेशंस क्यों नहीं ले पाते? We have very few examples of these accreditations, right? Hand-picked, but why do not we have these accreditations that also means high quality of healthcare to patients? देखिए इसके अंदर अगर हम पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक तो लीडरशिप नहीं है कि वो कहे भाई हम एक्रेडिटेशन कराते हैं और रूल्स रेगुलेशंस नहीं आ रहे. थोड़ा सा आगे कर लीजिए. हेलो, पब्लिक सेक्टर की बात करें तो लीडरशिप नहीं है जो कहे कि भाई हम हॉस्पिटल की एक्रेडिटेशन कराते हैं. और दूसरी बात ये है कि इनर्शिया, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन हॉस्पिटल, तो वो हमारे सीनियर जब मैं वहाँ काम करता था, रेजिस्टेंट टू चेंज बहुत है. आप एक बात लेके जाएं कोई भी कि भाई अब आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर दी, इतनी फैकल्टी पढ़ी लिखी इतनी रेजिस्टेंट होती है वहाँ पे कि मैं आपको बता नहीं सकता. तो रेजिस्टेंस टू चेंज एक विल और लीडरशिप. लेकिन अगर हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आ जाए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहती है कि नहीं भाई अब हमें कराना है और वो हेल्प करती है, तो ग्रेजुअली हो सकता है ये सारा काम. हो सकता है सर ये. ऑलराइट. सो आप कह रहे हैं लीडरशिप एंड एक विट चाहिए. और इसकी फिर मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, फिर आप कहेंगे वो डाव की बात कर रहे हैं. लेकिन जब हमने डाव में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू किया तो लोग हमें आके कहते थे यार तुम लोग ज़रा पहले अपने वो ब्लड LFT तो सही चेक करना, देख लो लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हो. बट देन द सेम फैकल्टी, द सेम टीम, we could implement the liver transplant program. अभी वो 179 live donor transplant हो गए. There is nothing wrong with the Pakistani people, nothing wrong with the faculty. It is the direction. Leadership आपको चाहिए, मिशन हो, सब चीज़ अचीव हो सकती है.
Right, sir. Sir, सामने ही रख दीजिए ये. Right, right. Okay. So yeah, feel free. Panelists, feel free. You want to Dr. interrupt? Basul, Feel thank free. you so much. आप ने बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगी. मैंने एक यूएसएड का प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने सिंध के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक सेक्टर के जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बीएचयूज़ हैं, आरएससी हैं और डीएचक्यू हॉस्पिटल्स हैं, इसके अंदर हमने कोशिश की थी कि कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाए मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ के हवाले से. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे लीडरशिप, हमारा ये अपना ऑब्जर्वेशन था कि जहाँ लीडरशिप के सामने एक विजन था, और विजन क्या कि आपको पता हो कि हमने अस्पताल खोला क्यों है. हमने बीमार को बीमार रखने के लिए खोला है, उसको मारने के लिए खोला है, या उसको सही करके घर भेजने के लिए खोला है. तो अगर आपकी लीडरशिप के अंदर विजन क्लियर है कि जनाब ये हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है हॉस्पिटल, तो मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए है, मॉर्बिडिटी को डिक्रीज़ करने के लिए, तो अगर ये विजन लीडरशिप में क्लियर था, वो हॉस्पिटल्स ने उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट भी किया और उसको कंटिन्यू भी किया. और जहाँ जहाँ हमने देखा जहाँ लीडरशिप का लैक था या जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स के, वहाँ पे जहाँ सुपरविजन ख़त्म हुई, वहाँ पे मोटिवेशन भी ख़त्म हो गई और वो सारे स्टैंडर्ड्स भी बंद हो गए. So that is one of the example. Right. Thank you very much. Let's move to question number 7. Can you just pull it up? Here you go. So I think you all can also read, but it says that what should be the top priority of improving healthcare in low-income, middle-income country like Pakistan. So the standing out is the primary care related to accountability and governance. Zishan, what do you have to say on this opinion that just been generated? What could be your top thing here? So I can talk a little generally, like आप हमें ये देखना है कि पाकिस्तान, what in general what we lack is our KPIs and targets, and I'm not sure what health in terms of health standards, what are our general target or general KPIs, जो कि अगर administration change होती है, governance change होती है, नए लोग आते हैं, do we have a standard KPI which we have to achieve and everybody is striving to that, and we have a convergence कि हमने आज हमारा health care system यहाँ खड़ा हुआ है और उसको एक certain level पे लेके जाना है. I think this is very very important that as a country we need to set certain KPIs and target, and whether there is a change in administration, change in regime, we will have to give health as a top priority. हमारे पास stunted growth है, हमारे पास mental issues बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. We need to put certain sort of priority to that and have a एक convergence create करने की ज़रूरत है in entire Pakistan. May it be pharmaceutical or hospitals or any other sector which is associated with this scenario. Right, sir, please. अच्छा, इस इशू के अंदर देखें जो प्राइमरी केयर सेटिंग है, अब वेस्टर्न लोग भी वापस से इसी पे जा रहे हैं, प्राइमरी केयर फिजिशियन प्राइमरी केयर प्रैक्टिस. चले वो जाए नहीं, लेकिन हम लोगों का तजर्बा ये है कि मैं जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ तो वो पेशेंट ले जाके अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाता है, और फैमिली फिजिशियन की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो उनको उनके वालिद साहब को भी देखा, दादा को भी देखा, पोते को भी देखा, एंड ही इज़ फुल्ली इन्वॉल्व विद द फैमिली. अगर हमें अचीव करने गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो यही हैं कि वी हैव गॉट टू रीच टू सर्टेन गोल्स. तो वी हैव गॉट टू स्ट्रेंथन आवर प्राइमरी केयर सर्विसेज, और वहाँ पे जो है वो मैं फिर कहूँगा कि यहाँ रोल गवर्नमेंट का तो है लेकिन हम सबका भी है, और इनकी जो है ना प्राइमरी केयर की जो ट्रेनिंग टीचिंग वो हमें चाहिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से करें और उन्हें फुल इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनको ही मालूम है उस फैमिली का जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस, पास्ट हिस्ट्री, और इसके साथ एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी आ सकती है अगर हम प्राइमरी केयर फिजिशियंस को इन्वॉल्व करें. Right. So I've been just asked that we have to close this session, though it was going very very nice. So my apologies for the panelists that we have to cut it short. There's some communication. So we'll close this session. We would not continue with the Q&A that we initially wished to do. So
I thank all the audience for the very active contribution and very active listening. And I am grateful to the great panel of experts that joined us today to have this meaningful dialogue. Thank you very much, everyone. Finally, we have some certificates for the panelists. So for this, I'll request Dr. Javed, if you can join us here for the certificates. Thank you.